Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher Malik Imran. Today this is my lecture number 35. In lecture number 34, we translated Unit 8, summary of the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. In lecture 35, we will do Unit 8, Stopping by Woods on a Snowy Evening. Exercise, MCQs, sentences and question answers. In lecture 34, I gave you summary of the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening as homework for writing in neat copies. Marks will be awarded to you on your homework. So let's start today's lesson. Open your books from page 83. Exercise question answers. Question 1. Who is the speaker in the poem? नज़म में बोलने वाला कौन है? Answer. The speaker in the poem is a poet who stops in the woods on a snowy evening. नज़म में बोलने वाला शायर है जो कि जंगल में एक बर्फीली शाम में रुकता है. Question 2. Whom does the speaker refer to in the first stanza of the poem? पहले बंद में बोलने वाला किसका हवाला देता है? Answer. The speaker refers to the owners of the woods. बोलने वाला जंगल के मालिक का हवाला देता है. Question 3. Why does the speaker stop on the darkest evening of the year? बोलने वाला साल की तारीक तरीन शाम में क्यों रुकता है? Answer. The speaker stops on the darkest evening of the year to see the gloomiest aspect of life. बोलने वाला साल की तारीक तरीन शाम में जिंदगी के उदास तरीन पहलू देखने के लिए रुकता है. His stay in the woods gives him profound thought about the reality of life and death. इसका जंगल में क़याम इसको ज़िंदगी और मौत की हकीकत के बारे में गहरा ख्याल देता है. Question 4. Why does the horse impatiently await the next move of his master? घोड़ा बेचैनी से क्यों अपने मालिक की अगली हरकत का इंतज़ार करता है? Answer. The horse impatiently awaits the next move of his master because he finds it very strange to stop at a place where there is no farmhouse. घोड़ा बेचैनी से मालिक की अगली हरकत का इंतज़ार करता है क्योंकि इसे इस जगह पर ठहरना बहुत अजीब लग रहा है जहाँ पर कोई ठहरने की जगह नहीं है. Question 5. The speaker in the poem is captivated by the beauty of nature. Why doesn't he stop for long to enjoy natural beauty? इस नज़म में बोलने वाला फितरत की खूबसूरती का असीर है. वो देर तक रुक कर उससे लुत्फ़अंदोज़ क्यों नहीं होता? Answer. He is captivated by the beauty of dark, deep and lovely woods, but he has promises to keep. वो स्याह गहरे और हसीन या दिलकश जंगल की खूबसूरती के सैर में गिरफ्तार है लेकिन इसको कई वादे निभाने हैं, कई अज़म पूरे करने हैं. Important word meaning MCQs. 1. My little horse must think it queer. The underlined word means. मेरे छोटे घोड़े ने ज़रूर अजीब सोचा. The correct option B. Strange. 2. The beauty of woods. जंगल की खूबसूरती. The underlined word woods mean जंगल. Correct option A. Forest. 3. He gives his harness bells a shake. इसने अपनी जीन की घंटियों को हिलाया. The underlined word harness means लगाम या ज़ेन. Correct option D. Bridles. 4. Of easy wind and downy flake. हल्के से चलती हवा और बर्फ़ के नरम गाले. The underlined word downy
means naram. Correct option C, soft. Important word sentences. Promised, وعدہ کیا. They promised to help each other in the hour of distress. انہوں نے دکھ تکلیف کی گھڑی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وعدہ کیا. فلیک، چھوٹے چھوٹے ذرے یا ٹکڑے. The children were playing with the flakes of snow. بچے برف کے چھوٹے چھوٹے گولوں سے کھیل رہے تھے. دو، اگرچہ. Though we are poor, we are generous. اگرچہ ہم غریب ہیں، ہم فیاض ہیں. Woods، جھاڑیاں، جنگل. I had to pass through these woods. مجھے ان جھاڑیوں میں سے گزرنا تھا. Downy، ملائم، نرم. Their downy feathers looked very attractive. اس کے نرم پر بڑے دلکش نظر آئے. I hope you will understand today's lesson. As homework, you will write word sentences in your neat copies. In lecture 36, we will understand adverb phrase. Daily listen the lecture and complete homework on neat copies. Marks will be given to you on your homework. Come on, boys. Band.